Hello guys, this is Suyash Goyal signing in. I hope you all are doing very well. So I welcome you all first of all in this particular session where we're going to talk about the NCERT questions. Okay, we're going to talk about the NCERT questions of arithmetic progression for class 10th. So first and foremost, I just want to have a touch base from all of you. Please tell me guys how many of you are here so that we can just have a hi, hello, and then we can begin with the session. Everyone out there, guys, my name is Suyash Goyal. I will be telling you about myself and about our platform Unacademy, and we will be discussing our NCERT questions for arithmetic progression. But in the beginning, I just want to know how many of you are there, guys. Can you hear me, everyone out there? Please tell me, guys, are you all there? Can you hear me, everyone out there, guys? Can you hear me, everyone out there? Hello, Avnish, how are you doing today? How are you doing today? Guys, come on, respond. All of you who are there, if you're able to hear me, please tell me. How are you all doing today? Everyone out there. Okay, that's very good. So, guys, today what we're going to do in this particular session is let me brief you about the session. We're going to discuss our NCERT questions for arithmetic progression of class 10th. Now, there are so many NCERT questions that I will be discussing with you. Apart from that, I will be sharing the concept as well with you, that on what concept the questions are based. So we will be beginning with some initial hiccups that we have in arithmetic progression, and then we will be talking about the questions that we have in NCERT. So moving forward, guys, small touch base about Unacademy. So Unacademy is India's largest learning platform. If any one of you does not know about Unacademy, guys, right now we are on Unacademy's YouTube channel. Okay, and if you do not have Unacademy learning application till now on in your mobile, please download it, guys. That will be so helpful, so helpful for your education. You all can attend live classes with the best educators of our country on Unacademy learning application. Okay, live practice questions are there that you can practice with different educators. Apart from that, weekly quizzes, doubt clearing sessions are there. Whatever you learn in a week, you can clear, you can have a quiz at the end of the week about that, whatever you have learned till now. Similarly, you can have the doubt clearing sessions as well. So whatever you are learning, if you have any kind of doubt, you can always ask that to the mentor, the teacher, the educator that is there. Now, if any one of you who is planning to subscribe to Unacademy Plus, you can use this code, guys, SG08. This is my code. You can use this and you will be able to get the 10% discount on the subscription charges. Talking about myself, guys, my name is Suyash Goyal, and I have been associated with Unacademy since November 2017. I basically teach mathematics and English on Unacademy because these are the two subjects which I love the most. ये मेरा रेफरल कोड है गाइस. अगेन आई एम टेलिंग यू अबाउट दिस. अगर आप में से कोई भी सब्सक्राइब करना चाहते हैं अनअकैडमी प्लस और आप अपनी पढ़ाई अनअकैडमी पर कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो आप ये कोड यूज़ कर सकते हैं और इस कोड को यूज़ करके आपको 10% का सीधा डिस्काउंट मिलेगा. ओके, now I'll talk about this later. Now guys, everyone out there, come on, tell me, can you hear me, everyone? Are you all ready to start with this discussion, everyone out there? Are we ready to start with this discussion, guys? Okay, cool. So now the topic that we are going to talk about is arithmetic progression. This is what we are going to discuss. Now guys, the first point that comes to my mind is that what is arithmetic progression? Hota kya hai? What is arithmetic progression? It's all right, Avnish, if you are not present. I mean, we are going to discuss the questions here as well, so you might be able to understand those things here. Okay, no issues. So guys, when I'm talking about arithmetic progression, I hope that you all know about sequences. That when we talk about sequence, what is a sequence? I hope you all know, right? A very good afternoon to you, PPS Chaudhary. Please focus here. Now guys, whenever I'm talking about a sequence, if I write something over here like 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, this is a sequence, yes or no? This is a sequence. Okay, all of you can understand the sequence that I am talking about. What I am talking about a sequence in which I have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, similarly, if I talk about one more sequence,
If we talk about this, guys, I have 1, 3, 5, 7, 9, 11. This is also a sequence, guys, yes or no? If we talk about this, this is also a sequence in which you have 1, 3, 5, 7, 9, 11, and so on. What is sequence? Sequence is the arrangement. Sequence is the arrangement, guys, where you can find out a particular pattern. तो जहां पर भी आपको एक पर्टिकुलर पैटर्न दिख रहा है कि हाँ यार यहाँ पर ना ये पैटर्न फॉलो हो रहा है नंबर्स को लिखते टाइम, तो दैट इज अ सीक्वेंस. तो जैसे कि अगर हम देखें तो यहाँ पर मुझे वो पैटर्न दिखाई दे रहा है, 1 के बाद 3 है, 2 का डिफरेंस, फिर 2 का डिफरेंस, फिर 2 का डिफरेंस. दिस इज ऑल्सो अ सीक्वेंस, राइट? सिमिलरली गाइज, अभी मैं एक और सीक्वेंस आपके लिए लिखता हूँ. ये टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे आई एम राइटिंग. सो इफ वी टॉक अबाउट दिस सीक्वेंस, आई हैव 1, देन आई हैव 4, then I have 9, then I have 16, then I have 25. What do you say, guys? Is this your sequence or not? Is this a sequence or not? Haji, is this a sequence or not? This is also a sequence. Who will tell me what kind of sequence is this? कौन मुझे बताएगा कि कौन सा sequence follow हो रहा है और next term मेरा क्या होगा? Who will tell me? What will be my next term and what kind of pattern is being formed over here? Who will tell me? What kind of pattern do we have over here? Exactly, right? If you talk about this, what do you have? You have squares over here, okay? सबसे पहले 1 का स्क्वायर है, फिर 2 का स्क्वायर है, फिर 3 का स्क्वायर है, फिर 4 का स्क्वायर है, फिर 5 का स्क्वायर है, ऐसे ही फिर आपका 6 का स्क्वायर आएगा, that is 36, then 7 square 49, then 8 square 64. So this is how you will keep on moving and moving and moving by having the squares. Am I clear, guys? You got it? So all these are sequences. ये सब आपके sequence होते हैं. और अगर मैं आपको कुछ ऐसा लिख के दूं, I have 1, then the next term is 1, next is 2, next is 2, next is 3, next is 3. This is again what? This is again your sequence. ये भी आपका क्या है? एक तरीके का sequence है. Now you know the next terms will be 4, 4. After that you will be having 5, 5. After that you will be having 6, 6. So all these are sequences. Then what is the difference between these sequences? I mean, what is the difference between these sequences, guys? If I talk to you about two different sequences, अब मैं सारे sequence यहाँ से हटा रहा हूँ और मैं सिर्फ दो sequence यहाँ पे रखूँगा. I'm removing this one, I'm removing this one, I'm removing this one. So now, guys, if I ask you what is the difference between this sequence and this sequence, can anyone tell me the difference between both these sequences? इन दोनों sequence में क्या difference आपको बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है? ये दोनों sequence अलग कैसे हैं? Why they are different? What is that particular thing which is making them different? Why is that so? Exactly. So if we talk about this particular thing, guys, if we focus over here, so in this, अगर मैं यहाँ पर डिफरेंस निकालना शुरू करूँ कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में, ये सीक्वेंस में मेरे पास 5 टर्म मुझे दिख रहे हैं. I have the first term, I have the second term, I have the third term, I have the fourth term, and I have the fifth term. Okay, if I talk about the difference between the second term and the first term, the difference between the second term and the first term is 3. Clear? Similarly, the difference between the third term and the second term is what? It's 5. Similarly, the difference between the fourth term and the third term is 7. Then the difference is 9. So if you see, the difference is increasing. First 3, then 5, then 7, and then 9. Yes or no? Getting my point? आपका difference जो है वो क्या हो रहा है? आपका difference जो है वो same नहीं है. आपके पहले और दूसरे टर्म के बीच में जो difference है वो दूसरे और तीसरे टर्म में नहीं है, और दूसरे और तीसरे में जो है वो तीसरे और चौथे में नहीं है, चौथे और पांचवें में नहीं है. तो आपके हर एक दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस जो है वो क्या आ रहा है? डिफरेंट आ रहा है. But if I talk about this scenario that you can see over here, guys, here the difference between 1 and 3 is what? The difference between 1 and 3 is 2.
Then the difference between 3 and 5 is what? The difference between 3 and 5 is 2. Then the difference between 5 and 7 is what? The difference between 5 and 7 is 2. The difference between 7 and 9 is what? The difference between 7 and 9 is 2. The difference between 9 and 11 is what? The difference between 9 and 11 is 2. So if you focus, the biggest difference that I have in the first series that I've written on the top left corner and in this series that I've written on the bottom, दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि इस सीरीज के अंदर मेरे पास जो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस है वो बार बार क्या आ रहा है, अलग आ रहा है, और इसके अंदर जो मेरे कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस है वो क्या आ रहा है, बार बार सेम आ रहा है. And that is the difference between any other sequence and that sequence which we call AP. तो याद रखिएगा guys, arithmetic progression is nothing but a sequence. Arithmetic progression is nothing but a sequence, and when I'm talking about arithmetic progression, I'm talking about that kind of sequence in which the difference between any two consecutive terms remains what? The difference between any two consecutive terms remains same. Yes or no? Clear? So whenever the difference between any two consecutive terms remains the same, whenever the difference between any two consecutive terms remains the same in any sequence, if the difference between two consecutive terms is same, we call that sequence to be what? We call that sequence to be arithmetic progression. We call that sequence to be AP. Am I clear or not? Everyone, you got this? Everyone out there guys, ये clear है आप सबको? तो आपका जो ऊपर वाला सीरीज है ये आपका सीक्वेंस नहीं है, ये आपका AP नहीं है. क्यों AP नहीं है? क्योंकि आपके दो टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो बार बार चेंज हो रहा है. बट जो नीचे वाला सीक्वेंस है ये आपका AP है. क्यों है? बिकॉज यहाँ पर आपके दो टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या रह रहा है, सेम रह रहा है, वो चेंज नहीं हो रहा है. सो दिस इज योर AP. Am I clear or not guys? Please tell me. You got it everyone out there? Sorted? Are we clear with this? You got it? Come on guys, everyone respond. Are we clear with this or not? Everyone out there, come on, respond guys, everyone. Are we clear or not? Please tell me quickly. Makes sense to you what we did till now, till here? You got it guys, everyone? Clear? Makes sense? चलो, let's move forward. अब चलते हैं आगे. तो हमें समझ में आ गया what is AP. We got to know the fact that AP is what? AP is nothing but when I talk about a sequence, in which the common difference or in which the difference between any two consecutive terms is same and it does not change, that is what we call AP. Now let's talk about some examples of AP. If you see the first one guys, the first one I am having 8,000, then I am having 8,500, then I am having 9,000. If we talk about this, 8,500 minus 8,000 is 500, 9,000 minus 8,500 is 500. So basically if you see in this series, the difference is what? The difference remains same, that is 500. And क्योंकि यहाँ पे difference change नहीं हो रहा है, difference same है, that is why I can say that this series is what? This series or this sequence is nothing but your arithmetic progression. Am I clear or not? Please tell me guys, you got it? Make sense? Clear? Okay, let's move forward. Let's talk about something else. So now if I'm talking about the second one, यहाँ पर अगर आप देखो, the length of the rungs of a ladder decrease uniformly by 2 centimeter from bottom to the top. The bottom rung is 45 centimeter in length. The length of the first, second, third, fourth, fifth and eighth rung from the bottom to the top are. अब देखो, बात समझो. Hello Tarun Pandey, how are you? So what we are doing guys, मैं नीचे से ऊपर जा रहा हूँ, ठीक है? मैं इस ladder में नीचे से ऊपर जा रहा हूँ और ये जो rungs होते हैं ना, this is what we call rungs. This is your rung. This is your rung, okay? This is your rung. So the length of this rung, okay, the length of this rung is decreasing as you move from bottom to up. I'm good. What about you, Tarang? Are you doing fine? So these are what we call rung. So जैसे जैसे मैं नीचे से ऊपर जा रहा हूँ, ये रंग की लेंथ क्या हो रही है guys? डिक्रीज हो रही है, yes or no? इनकी लेंथ डिक्रीज हो रही है, yes or no? बोलो यार. जैसे जैसे आप नीचे से ऊपर जा रहे हो, ये रंग की लेंथ क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है. And now when the length of this rung is decreasing, is getting decreased, you can see the first one is having the length 45, उसके बाद अगली की दो रिड्यूस हो गई 43, फिर दो रिड्यूस हुई 41, फिर दो रिड्यूस हुई 39, 37, 35, 33, 31. Yes or no? Am I clear or not? Got the point? Everyone clear till here guys or not? Please tell me. You got it? Make sense? Okay. Now guys, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कोई भी दो consecutive terms जो हैं उनके बीच का डिफरेंस सेम है या नहीं है?
45 43 में डिफरेंस 2 का है, 43 41 में 2 का है, 41 39 में 2 का है, 39 37 में 2 का है, सब में 2 का है. It means what? It means that this series is what? This series or this sequence is what? This is an AP. हाँ जी, yes or no? Please tell me you got it. This is nothing but an AP. ये बात किस किस को क्लियर है बताओ फटाफट से. Cool. Everyone clear? Tarang clear? Avnish clear? Everyone clear or not guys? Please tell me you got it. Everyone out there. ठीक है. ओके चलो अब चलते हैं आगे. तो ये तो हमने बात करी बहुत ही लॉजिकल चीज़ों की गाइस. अब कुछ और बातें करते हैं. एंड कुछ और बातें ये हैं कि जैसे मैंने एपी लिखी वहां पर, लेट्स से आई राइट एन एपी. आई हैव 2, देन आई हैव 4, देन आई हैव 6, देन आई हैव 8, देन आई हैव 10, देन आई हैव 12, then I have 14. Can you all see this guys? Everyone out there? Can you all see this? I have 2, 4, 6, 8, 10, 12, 8, 14. Okay. Now when I'm talking about these scenarios, okay, when I'm talking about these scenarios and I'm talking about these things, अगर आप देखोगे तो इस AP का common difference को हम लोग लिखते हैं D से. Common difference is represented by D. ठीक है guys? Common difference is represented by small d and common difference कितना होगा? 4 minus 2 और 6 minus 4 और 8 minus 6 और 10 minus 8 और 12 minus 10, ये सब मुझे कॉमन डिफरेंस देते हैं एंड दैट विल बी इक्वल टू 2. ये बात किस किस को क्लियर है? एवरीवन क्लियर? सो व्हेन आई हैव एन एपी, व्हेन आई हैव एन एपी, सो उस एपी का जो कॉमन डिफरेंस मैं लिखूंगा वो कैसे लिखूंगा? वो लिखूंगा d एंड d इज इक्वल टू व्हाट? d इज इक्वल टू 2. ओके नाउ the terms that I am having 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, these are known as what? These are known as the terms of AP. Okay, इनको बोलते हैं AP के terms. So this is what we call the first term, और first term को हम लोग represent करते हैं A1 से या A से. ठीक है. second term को हम लोग represent करते हैं किससे? A2 से. Third term is what? A3. Fourth term is what? A4. Fifth term is what? A5. And similarly, you write down the respective terms. Okay. So first term A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10. So this is the respective terms. कि AP का first term, second term, third term. जैसे आप देखोगे, so in this AP the first term is 2, second term is 4, third term is 6, fourth term is 8. Fifth term is 10, sixth term is 12, seventh term is 14, okay, eighth term is going to be 16, ninth term is going to be 18, 10th term is going to be 20. So this is how I can write down what? I can write down all the terms that I have in my AP. Am I clear or not guys? You got it? Everyone clear or not? Please tell me. Got the point? Everyone clear with this till here? Everyone clear with this till here guys? You got it? ठीक है. तो यानी कि if I'm talking about my AP guys, तो यहाँ पर यही लिखा है कि AP का फर्स्ट टर्म हम लोग डिनोट कर रहे हैं A1 से, सेकंड A2 एंड सो ऑन अप टू nth टर्म. ओके. कॉमन डिफरेंस की जहाँ तक बात है, आई एम सेइंग दैट द कॉमन डिफरेंस ऑफ माय AP इज व्हाट? द कॉमन डिफरेंस ऑफ माय AP इज D. हाउ मेनी ऑफ यू गॉट दिस? ठीक है, कॉमन डिफरेंस D है. तो AP क्या होगा? AP होगा A1, A2, A3, A4, A5. ये मेरा AP हो जाएगा. अब गाइस कहानी क्या होती है, जब भी हम लोग, मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, आपके पास एक सीरीज है 2, 4, 6, 8, 10. हाँ जी, टेल मी व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस सीरीज? इस सीरीज के लिए कॉमन डिफरेंस क्या है? एंड देन यू हैव अ सीरीज 10, 8, 6, 4, 2. और इस सीरीज के लिए कॉमन डिफरेंस क्या है? जरा बताना मेरे को फटाफट से. हाँ जी, who will tell me? What is the common difference for the first series and what is the common difference for the second series? ये मुझे जानना है. Please tell me this. Avnish says 2 and minus 2. कैसे निकाला हम? तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए गाइस वी ऑलवेज राइट इट एज
सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ओके, कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए कभी भी फर्स्ट टर्म में से सेकेंड टर्म को माइनस नहीं करेंगे, वी विल ऑलवेज सब्ट्रैक्ट द फर्स्ट टर्म फ्रॉम द सेकेंड टर्म। ओके, we always write it as second term minus first term, that we can write it in this way as well. I will be writing a2 minus what, a2 minus a1. Am I clear? This is how we find out the common difference. आगे वाले टर्म में से पीछे वाले टर्म को हमेशा माइनस करते हैं। जैसे कि जब मैं यहाँ पर कॉमन डिफरेंस निकालूंगा तो 4 माइनस 2, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, दैट विल बी 2। और जब मैं यहाँ पे कॉमन डिफरेंस निकालूंगा दैट विल बी सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, दैट इज 8 माइनस 10, दैट इज माइनस 2। ये बात सबको क्लियर है या नहीं? Am I clear? एंड इसीलिए यहाँ पर लिखा है हम लोग हमेशा आगे वाले में से पीछे वाले को माइनस करते हैं, विच मीन्स सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, और थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, और फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, और यू कैन राइट इट इन दिस वे, nth टर्म माइनस n माइनस 1th टर्म। ओके, जहाँ पे n की वैल्यू आपकी कुछ भी हो सकती है। अगर आप n को 5 पुट करते हैं तो फिफ्थ टर्म माइनस n माइनस 1, 5 माइनस 1 फोर्थ टर्म। अगर आप n को 10 पुट करते हैं तो 10th टर्म माइनस 10 माइनस 1 9th टर्म, 10th टर्म माइनस 9th टर्म। ओके, तो जब भी आप ऐसे करोगे वहां से आपको क्या मिलेगा, वहां से आपको आपका कॉमन डिफरेंस मिलेगा, दैट इज t। Am I clear or not? You got this guys? Everyone clear with this? हाँ जी, everyone clear or not? Please tell me you got it. Avnish clear, Tarang clear, everyone clear or not? Please tell me guys, you got it or not? अब चलते हैं जरा क्वेश्चंस पर। नाउ वी आर इन अ पोजीशन दैट वी कैन टॉक अबाउट द क्वेश्चंस। ओके, चलो। So guys, here I have for the AP 3/2, 1/2, minus 1/2 and minus 3/2. I need to write down the first term. First term क्या होगा? First term is the first one. ये जो सबसे पहला term आ रहा है, this is my first term. And if I want to write down the common difference, what will be the common difference, guys? What will be the common difference? The common difference will be second term, that is 1/2, minus first term, that is 3/2. So common difference is 1/2 minus 3/2, and that is equal to minus of 1. Clear? That is equal to what? That is equal to minus of 1. Similarly guys, if I talk about this question, in this question I need to tell which of the following list of numbers form an AP. If they form an AP, write the next two terms. So what I'm supposed to tell is this. मुझे ये बताना है कि the first one, second one, third one and fourth one that I have been given over here, which of the following list forms an AP? इनमें से कौन सा वो है जो कि एक arithmetic progression वाला sequence है, और अगर इनमें से कोई वो sequence है तो उनके next two terms क्या होने वाले हैं, ये मुझे बताना। You got the question, everyone? Clear? Okay. Now, if I talk about the first one, guys, what do you think? पहला वाला मेरा AP है या नहीं है? Is the first one my AP or not? Come on, tell me, everyone. First one is AP or not? Everyone respond, guys. Is the first one your AP or not? Yeah, it's an AP. Why it's an AP? It is an AP, guys, because if you see, the difference between the second term and the first term is as same as the difference between the third term and the second term, and is as same as the difference between the fourth term and the third term. Because A2 minus A1 is equal to what? Is equal to A3 minus A2. Is equal to what? Is equal to A4 minus A3. Okay, because A2 minus A1 is equal to A3 minus A2 is equal to A4 minus A3. That is why you can say what? That is why you can say कि हाँ जी जो आपको दे रखा है this is your AP, because यहाँ पे difference जो है दो consecutive terms के बीच का वो same है। And difference कितना है? अगर आप difference देखोगे, difference is coming out to be 10 minus 4. That is what? 10 minus 4 is nothing but 6. It means the difference is what? The difference is 6. Am I clear? Now when the difference is 6, guys, it's very simple for you. अब आप next terms निकाल सकते हो. You are exactly right, Avnish. Next term will be what? It will be 22 plus 6, that is 28.
and then 28 plus 6, that is 34. ये बात clear है सबको या नहीं है? Please tell me. You got it, guys? Everyone clear with this? You got it? Everyone clear with this or not? You got this, guys? Everyone clear? Okay, so this is how we can find out the next two terms as well. Am I clear? You got it, everyone? Chalo. If I talk about the second one, come on, tell me, Avnish, second one, and all of you. Tarang, what about you? Second one is an AP or not? Second one is an AP or not? Yes or no? TPS Chaudhary, what about you? Second one is an AP or not? Come on, tell me. Okay. Avnish says no, it's not an AP. Let's have a look. Let's focus. So Avnish, if I talk about this, focus. My second term is -1. Minus first term. -1 will be what? It will be -2. तो यहाँ पर आपको कॉमन डिफरेंस कितना मिला? यहाँ पर आपको डिफरेंस मिला -2. ठीक है. अब थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म करते हैं. तो थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म जब करेंगे तो इट विल बी -3 माइनस ऑफ -1. यस और नो? ऐसे करेंगे. एंड दैट विल बी व्हाट? दैट विल बी -3 + 1. -3 + 1 कितना होता है गाइस? -3 + 1 इज इक्वल टू -2, राइट? इसका मतलब क्या है कि अभी तक तो डिफरेंस सेम ही आया है. अब देखते हैं फोर्थ और थर्ड को माइनस करके. व्हेन आई विल बी सेइंग -5 minus of -3, okay, fourth term minus third term, which means -5 minus of -3, that will be what? -5 + 3, and -5 + 3 is -2. तो अगर आप देखोगे the difference is coming to be what? The difference is coming to be exactly same. A2 minus A1 is as same as A3 minus A2, and it is as same as A4 minus A3, and that is why the expression or the sequence that you have been given, this forms your AP. ये आपका क्या है? ये आपका AP है. Am I clear or not? You got it, guys? Everyone clear with this? You got this, everyone? Guys, are we clear with this or not? You got it, everyone? Tarang, is it clear to you? PPS Chaudhary, Avnish, clear or not? You got it? So this is your AP. Now let's talk about the third one. Okay, come on, tell me, guys, is your third one an AP or not? Third वाला आपका AP है या नहीं है? Come on, do it quickly. Is third one your AP or not? Come on, guys, think about it. Third one. The terms are -2, 2, -2, 2, -2. What about it? Is this your AP or not? Let's check out the difference between two consecutive terms. Let's check it out. Let's see if it works for you. Exactly, because if we talk about this one, अगर इसकी बात करें तो देखो क्या होगा. 2 minus of -2 will be 4. A2 minus A1 second term minus first term आ गया 4. फिर third term minus second term जब मैं करूँगा -2 that will come out to be -4. यानी कि A2 minus A1 is not equal to A3 minus A2. Which means what? Which means it's not an AP. ठीक है. Similarly, अगर मैं बात करूं फोर्थ वाले की, तो फोर्थ वाले में देखो 1 - 1 is 0, फिर 1 - 1 is 0, फिर 2 - 1 is 1, फिर 2 - 2 is 0, 2 - 2 is 0. तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पहले डिफरेंस 0 आ रहा है, फिर 1 आ गया. इसका मतलब क्या है? ये भी आपका AP नहीं है. Fourth one is also not an AP. How many of you are clear with this? Please tell me. Everyone got this? Everyone clear with this or not, guys? You got it, everyone? Okay, चलो अभी चलते हैं आगे. Okay, guys. So now we have these situations out there, and अब हम लोग इनके बारे में बात करने वाले हैं कि whether these situations are forming your AP or not. Okay? क्या ये AP फॉर्म करते हैं या नहीं करते हैं? सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट वाले का. The first one that I have, okay, the first one that I have is the taxi fare after each kilometer. The taxi fare after each kilometer, when the fare is ₹15 for the first kilometer and ₹8 for each additional kilometer. Tell me, guys, सबसे पहले तो मुझे बताओ कि ये AP है या नहीं है, और अगर है तो वो AP के टर्म्स बताओ, और अगर नहीं है तो बात ही खत्म. Come on, guys, tell me.
Tell me whether it's an AP or not, or if it's an AP, so tell me the first four terms of this AP. Tell me the first four terms. Come on, do it, guys. Didn't get it. Okay, I'm gonna tell you. Don't worry. Now let's talk about it. अभी करते हैं इसकी बात, ठीक है? So I have the taxi fare after each kilometer when the fare is rupees 15 for the first kilometer and rupees 8 for the additional kilometer. For the first kilometer fare is what? For the first kilometer fare is rupees 15. Okay. It means कि अगर मैं सिर्फ 1 किलोमीटर की जर्नी करता हूँ, अगर मैं सिर्फ 1 किलोमीटर की जर्नी करता हूँ, then I'll have to pay 15 rupees. Clear? Very good. Now, if I go 2 kilometers, तो उस केस में क्या होगा? पहले किलोमीटर के लिए the fare is 15. For the first kilometer fare is 15 and for the next kilometer fare is rupees 8. Yes or no? For the first kilometer fare is 15 and for the second kilometer fare is 8. It means अगर मैं 2 किलोमीटर की जर्नी करूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा? जो मेरे पास फेयर है वो कितना हो जाएगा? वो 15 + 8 हो जाएगा. यस और नो? हाँ जी, यस और नो? इज दैट क्लियर टू यू? अगर मैं 3 किलोमीटर की जर्नी करता हूँ, इफ आई हैव अ जर्नी ऑफ 3 किलोमीटर, सो इन दैट केस द फर्स्ट किलोमीटर विल बी चार्ज्ड एज 15 rupees and the second and third kilometer will be charged as 8 + 8. Am I clear? You get this? Very good, Avnish. Okay. Similarly, if I take the journey of how many kilometers? 4 kilometers. So in that case, first kilometer will be 15. Then I will be having second kilometer as 8. Then I will be having third kilometer as 8. And then I will be having fourth kilometer as 8. Am I clear or not, guys? You got this? Everyone clear with this? अब अगर मैं ये सिंप्लीफाई करके लिखूं, so I will be having what? I will be having 15. Then I have 23. Then I have 31. Then I have 39. And if you see, this is your AP. अगर आप देखोगे तो कोई भी दो consecutive terms के बीच का difference जो है वो same आ रहा है. किसके equal आ रहा है? वो 8 के equal आ रहा है, which means this is your AP. Yes or no? Is that clear to you now, Abnish? Tarang, is that clear to you? PPS Chaudhary, is that clear to you guys? Got it? Chalo, very good. Now, what about the second one? Second wala karo. Tell me, is the second one forming your AP or not? Is this your AP or not? Come on, tell me quickly. Everyone out there, is second your AP or not? Come on, do it, guys. Guys, everyone out there, come on, do it. The second one, amount of air present in a cylinder when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time. What will be the answer? Come on, think about it, guys, everyone. Okay, why it's not an AP? Okay, अगर हम लोग इसकी बात करें तो देखो आपको इसको ऐसे समझना होगा. ये अच्छा क्वेश्चन है, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज लाइक दिस कि मेरे पास सिलेंडर है एंड इन दिस सिलेंडर राइट नाउ आई एम हैविंग अमाउंट ऑफ एयर टू बी एक्स. अभी मेरे पास एक्स अमाउंट ऑफ एयर है, ठीक है. मान लिया मैंने कि अभी मेरे पास एक्स अमाउंट ऑफ एयर है, ठीक है. कूल, यानी कि पहला टर्म मेरा हो गया एक्स. अब जब मेरे पास x अमाउंट ऑफ एयर है, हो क्या रहा है? जब मैं वैक्यूम पंप यूज कर रहा हूँ, इफ आई एम यूजिंग अ वैक्यूम पंप टू रिमूव द एयर, then that vacuum pump removes 1/4 of the air available or remaining in the cylinder.
मतलब सिलेंडर में जितनी भी एयर है ना उसका 1/4 वैक्यूम पंप क्या करेगा, निकाल देगा। ओके, तो जब मेरे पास यहाँ पर x अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट है तो इसका 1/4 कितना होगा गाइस, 1/4 विल बी 1/4x, यस और नो, हाँ जी ये होगा। So it is going to be 1/4x, right or not? Am I clear? Right? So this is the amount that will be removed from your cylinder. जब इतना अमाउंट आपका सिलेंडर से रिमूव करा जाएगा तो अब आपके पास रिमेनिंग एयर कितनी बची, आपके पास रिमेनिंग एयर बचेगी x माइनस 1/4x एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू 3/4x। तो दूसरा टर्म आपके पास जो आपके सीक्वेंस में आ गया वो कितना आ गया, 3/4x। इज दैट क्लियर टू यू एवरीवन गाइस, एवरीवन गेटिंग इट? ओके, दूसरा टर्म आया 3/4x। अगर मैं तीसरे टर्म की बात करूं तो थर्ड टर्म इज व्हाट, देखो अब मेरी बात सुनो, अब आपके पास सिलेंडर में कितनी एयर रिमेनिंग है, अब अगर आप देखोगे तो आपके पास सिलेंडर में कितनी एयर है गाइस, कम ऑन टेल मी। In the cylinder right now you have 3x/4. This is the amount of air present in your cylinder right now, 3x/4. After removing x/4 amount of air, now the remaining amount of air is 3x/4. अब क्या होगा, वापस से when you will be using this vacuum pump, the vacuum pump will again remove 1/4 of the remaining air. 1/4 of the remaining air, which means 1/4 of this 3x/4, जो कितना होगा, अगर मैं 3x/4 का 1/4 निकालूं so that will be 1/4 into 3x/4, am I clear? And that will be equal to what, that will be equal to 3x/16, am I clear or not? That will be equal to 3x/16. You got this, am I clear? You got this guys? ओके यानी कि अब जो मेरी एयर रिमूव होगी वो कितनी होगी, 3x/16, अवेलेबल कितनी है 3x/4। जब 3x/4 में से 3x/16 माइनस करूंगा, व्हेन आई विल सब्ट्रैक्ट 3x/16 फ्रॉम 3x/4, व्हाट आई विल बी गेटिंग, आई विल बी गेटिंग 6x/16, सॉरी 9x/16। तो मेरा थर्ड टर्म क्या आ गया, मेरा थर्ड टर्म आ गया 9x/16। इज दैट क्लियर टू एवरीवन गाइस? और अब अगर आप अपने इन तीन टर्म्स को ध्यान से देखोगे, इफ यू लुक एट दीज टर्म्स क्लोजली, यू विल गेट टू नो कि सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज नॉट इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, एंड क्योंकि सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज नॉट इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, दैट इज व्हाई यू कैन से दैट दिस इज नॉट व्हाट, दिस इज नॉट योर एपी, ये एपी नहीं है। Is that clear to you guys? You got this? Everyone clear with this or not? Come on, tell me. You got this, everyone? Avnish clear? Ollie, Milesy, is that clear to you? PPS, is that clear to you? And Tarang, is that clear to you? Everyone got this? Chalo, very good. Let's move forward now. जब ये क्लियर है तो चलते हैं अब आगे, और अब आगे जो हमें देखना है, अच्छा तो थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन आप करोगे, just try to do them. Now I'm coming to second question directly. Talking about the second question guys, बहुत simple सा question है, we need to find out the first four terms of the AP जब हमें first term और common difference given है, ठीक है। अब देखो मेरी बात सुनो, जब मैं AP की बात कर रहा हूं तो अगर मेरा first term A है और common difference D है, if my first term is A and common difference is D, so can't I say that my second term will be A plus D? Yes or no? Similarly, can't I say that my third term will be A plus 2D? Haji? Can't I say that my fourth term will be A plus 4D? Yes or no, everyone? You getting it? Are you getting the point? Similarly, can't I say that my fifth term, my sixth term will be what? A plus 5D? कह सकते हैं, नहीं कह सकते यार, हर बार डी तो ऐड करना है ना, हर बार डी तो ऐड करते जाना ना। तो अगर पहला टर्म ए है, अगर पहला टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस डी है, ओके, इफ द फर्स्ट टर्म इज व्हाट, इफ द फर्स्ट टर्म इज ए, इफ द फर्स्ट टर्म इज ए एंड द कॉमन डिफरेंस इज डी, अगर पहला टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस डी है तो क्या होगा, तो सेकंड टर्म विल बी ए प्लस डी।
Third term will be a plus d, a plus 2d. Fourth term will be a plus d plus d plus d, a plus 3d. Fifth term will be a plus d plus d plus d plus d, a plus 4d. And sixth term will be a plus d plus d plus d plus d plus d, which means a plus 5d. क्लियर? तो यहाँ पर मेरे को जो क्वेश्चन गिवन है उसके अंदर मुझे ये गिवन है कि यहाँ पर मुझे फर्स्ट फोर टर्म्स फाइंड करना है अपने ए बी के, जबकि पहला टर्म मुझे ए गिवन है और कॉमन डिफरेंस मुझे डी गिवन है. चलो करते हैं गाइस, लेट्स डू इट. So guys, if you see the very first question, in the very first question I have a is equal to 10 and d is equal to 10. So when my first term is 10, okay, when my first term is 10 and my common difference is 10, so second term will be what? 10 plus 10, that is 20. Third term will be what? 20 plus 10, that is 30. Fourth term will be what? 30 plus 10, that is 40. Fifth term will be what? 40 plus 10, that is 50. Am I clear? You getting it? So this is how I can find out the required AP. Am I clear? You got it? Yes or no? Come on, tell me guys, everyone, are we clear with this till here? You got this? Everyone clear with this till here? You got this, guys? Okay. So similarly, come on guys, let's do the second question. अगर सेकंड वाला क्वेश्चन हम लोग करेंगे तो ये तो और ही सिंपल है. अगर आप देखो सेकंड वाले में, तो सेकंड वाले में क्या है? सेकंड वाले में a माइनस 2 है और d 0 है. ओके, अब जब a माइनस 2 और d 0 होगा तो देखो क्या होगा. पहला टर्म हो गया मेरा माइनस 2, दूसरा टर्म मेरा होगा माइनस 2 प्लस 0, दैट इज माइनस 2. तीसरा टर्म मेरा होगा माइनस 2 प्लस 0 दैट इज माइनस 2. फिर चौथा टर्म माइनस 2. तो ये एक ऐसी एपी है जिसमें मेरे सारे टर्म क्या है? जिसमें मेरे सारे टर्म सेम है. क्यों? क्योंकि कॉमन डिफरेंस जो है मेरा इस एपी के लिए वो क्या है? 0 है. एम आई क्लियर और नॉट? ओके, नाउ you all will do the third one. अब आप सब जो है तीसरा वाला करो. Come on, do it guys. The third one, this one. Everyone do the third one. Third one of the second question. Tell me the first four terms. Okay, tell me the first four terms of the AP. पहले चार टर्म मुझे दो AP के. Quickly. Come on, do it guys. Come on, everyone, do it quickly. Okay, minus 1, minus 1 by 2, 0, 1 by 2. Let's have a look. Let's see. So guys, first term that I am having of this AP is what? First term that I am having of this AP is 4. पहला term मेरा 4 है और common difference मेरा कितना है? Common difference मेरा -3 है. जब पहला term 4 है और common difference -3 है तो दूसरा term मैं कैसे निकालूंगा? A plus D, which means A plus -3, right? A plus -3, which means 4 plus -3 is what? 4 plus -3 is 1. यानी कि दूसरा टर्म कितना आ गया? पहला टर्म 4, दूसरा टर्म कितना आ गया? 1. सो फर्स्ट टर्म इज 4. आई एम राइटिंग इट हियर. फर्स्ट टर्म इज 4 एंड सेकंड टर्म कम्स आउट टू बी 1. अब थर्ड टर्म निकालने के लिए क्या करेंगे? 1 अगेन प्लस -3, विच मीन्स 1 -3, एंड दैट विल कम आउट टू बी व्हाट? दैट विल कम आउट टू बी -2. एम आई क्लियर? दैट विल कम आउट टू बी व्हाट? दैट विल कम आउट टू बी -2. इज दैट क्लियर टू यू? तो अगला टर्म कितना आ गया? अगला टर्म आपका आएगा -2. ठीक है जी, और आगे चलते हैं. अब नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए क्या करेंगे? नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए अगेन -2 -3, दैट इज -5. नाउ यू आर राइट अवनीश. सो इट इज गोइंग टू बी व्हाट?
इट इज गोइंग टू बी -5। तो इस तरीके से हम क्या करते जाएंगे, अपने टर्म्स निकालते जाएंगे। इज दैट क्लियर टू यू नाउ गाइस? एवरीवन क्लियर? एवरीवन गॉट दिस नाउ? एवरीवन क्लियर विद दिस नाउ? ओके, नाउ लेट्स डू वन थिंग गाइस, नाउ लेट्स डू द फिफ्थ क्वेश्चन। अभी करते हैं हम लोग फिफ्थ वाला। ओके, अब फिफ्थ वाला करते हैं। सो एवरीवन कम ऑन ट्राई, सब ट्राई करो पहले। एवरीवन ट्राई द फिफ्थ वन, everyone try the fifth question, the fifth one, come on try. You have your a as what? You have your a as -1.25, it's all right। अभी करके देखो, ये फिफ्थ वाला देखो होगा। आपका a जो है वो -1.25 है और d जो है वो कितना है, d जो है वो -0.25 है। करो, लेट्स फाइंड आउट द नेक्स्ट 4 टर्म्स ऑफ दिस एपी। इस एपी के अगले 4 टर्म निकालने हैं। Come on, guys, do it quickly. The fifth one, it's a simple one. We just need to find out our next 4 terms. I have the first term and I have the common difference already. Come on, do it quickly, everyone out there. Are you guys doing it or not? Please tell me quickly, guys. Are you doing it or not? Come on. Or should I move forward? Should I proceed with this? Okay, let's do it. चलो करके देखते हैं। This is my a -1.25. This is my d -0.25। ठीक है, अभी हम लोग को निकालना है और बाकी टर्म्स निकालते हैं फटाफट से। ठीक है, when your a is -1.25 and your d is -0.25, let's find out the other terms. Okay, when I will find out other terms, what will they look like? If I focus over here, they will look like as, next term will be a plus d. Guys, hello Arosri Arindam, how are you? Next term will be what? Next term will be a plus d, which means -1.25 minus 0.25। यस और नो, होगा नहीं होगा? और इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? व्हेन यू सॉल्व दिस यू विल बी गेटिंग -1.50। क्लियर? Very good, Avnish. Very good, Arindam. Now, first term is -1.25 and second term will be what? Second term will be -1.50। अब निकालते हैं थर्ड टर्म। थर्ड टर्म निकालने के लिए क्या करेंगे गाइस? माइनस ऑफ 1.50। इट्स ऑल राइट अवनीश, -0.25। ठीक है, अब ये करते हैं। जब ये करेंगे तो इससे हमें क्या मिलेगा? इसको करके अगेन वी विल गेट द सेम थिंग, दैट इज माइनस ऑफ 1.75। यस और नो? फिर वापस से -2.5 से करूंगा तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगा कितना? -2.0। उसके बाद दोबारा निकालूंगा तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगा -2.25। सो दिस इज हाउ आई कैन फाइंड आउट माई एंटायर एपी। ओके, इस तरीके से मैं जो है अपने
पूरे एपी के सारे टर्म्स जो है लिख सकता हूँ. Am I clear or not, guys? Please tell me. Everyone got this? Everyone clear with this now? You got it, everyone? Okay. Chalo. Now let's talk about some more questions like this. Okay, guys. So let's talk about this question. In this question, hello Saksham, how are you? In this question we need to find out कि इनमें से कौन से जो हैं वो APs हैं, इनमें से कौन से APs हैं, एंड और अगर ये इनमें से कोई AP है तो कॉमन डिफरेंस D क्या होगा और अगले तीन टर्म्स क्या होंगे. दिस इज व्हाट आई एम सपोज टू टेल. ओके, ये मेरे को बताना है कि इनमें से कौन सा AP है, अगर AP है तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा और अगले तीन टर्म्स जो हैं क्या होने वाले हैं. एम आई क्लियर? यू गॉट दिस? ओके, लेट्स डू इट. सबसे पहले हम लोग करेंगे अपना थर्ड क्वेश्चन. तो हमें ये चेक करना है वेदर इट्स एन एपी और नॉट. कैसे करेंगे? वेरी सिंपल गाइस. मैंने -3.2 में से 1.2 -1.2 सब्ट्रैक्ट करा. -3.2 माइनस ऑफ -1.2 दैट इज +1.2 एंड दिस विल गिव मी व्हाट? दिस विल गिव मी -2. क्लियर? एंड इफ यू सी मेरे पास पहला कॉमन डिफरेंस, मेरे पास पहला डिफरेंस -2 आया. लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन. अब अगर इसको और इसको यूज करके सॉल्व करूं तो -5.2 minus of minus that is +3.2 that will come out to be what? That will again come out to be -2. yes or no? वो वापस से आपका -2 आएगा. ओके, तो ये भी -2 है, ये भी -2 है. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये जो आपको दे रखा है दिस इज योर एपी. यस और नो? ये आपका एपी है, ये आपका एपी है. और अगर मुझे अगले दो टर्म, अगले तीन टर्म इस एपी के निकालने हैं तो मैं आराम से निकाल सकता हूँ. अगले तीन टर्म क्या होंगे? -7.2 के बाद आएगा -9.2 और -9.2 के बाद आएगा -11.2. Am I clear with this, everyone? You got this? This is what you will be getting over here. ये जो है आपको यहाँ पर मिलेगा. ठीक है, समझ में आ गया? Okay. Now all of you try to do the fifth question. अब आप सब fifth question करने का try करो. बताओ मेरे को, is the fifth question, is the sequence that has been given to you in the fifth one, is this your AP or not? And if it is your AP, what is the common difference? Come on guys, do it quickly. I'm talking about the fifth one, that we have. Fifth one is your AP or not? And if it is your AP, tell me the common difference. That's all. Okay, come on, do it quickly, everyone. Guys, come on, tell me quickly, is the fifth one your AP or not? Very good Adesh, very good Avnish. Exactly, if you see over here, अगर आप fifth one को देखोगे तो you have 3 plus √2 and 3. अगर आप इन दोनों को subtract करो you will be getting √2. फिर अगर आप थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस करोगे तो आपको मिलेगा क्या? 3 plus √2 minus 3 plus √2 that will again give you √2. इसी तरीके से जब आप इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे अगेन यू विल गेट √2. एंड बिकॉज यू आर गेटिंग √2 इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स कि आपका ये एपी है बिकॉज डिफरेंस सेम है. यू हैव द कॉमन डिफरेंस एंड द नेक्स्ट टू टर्म्स विल बी व्हाट? अगले दो टर्म आपके कौन से होंगे? नेक्स्ट टर्म विल बी 3 plus 4 √2. ओके, एंड उसके बाद उसका अगला टर्म कौन सा होगा? 3 plus 5 √2. ओके, सो द नेक्स्ट टर्म दैट यू विल बी हैविंग इज 3 plus 5 √2. Clear? Makes sense? You got it, everyone? That's how we can do it. Now guys, the next question is this one. Sixth one. What about sixth one? What about this one? Sixth one. What do you think?
एक्सप्रेशन दैट यू हैव बीन गिवन, ये आपका एपी है या नहीं है? ये सिक्स वाला अगर एपी है तो उसका कॉमन डिफरेंस क्या है, और अगर नहीं है तो नहीं है, इट्स ओके। हाँ जी, हु विल टेल मी अबाउट दिस सिक्स्थ वन? सिक्स्थ वन इज नॉट एन एपी। व्हाई इट्स नॉट एन एपी? बिकॉज अगर आप यहाँ पर अपना कॉमन डिफरेंस निकालोगे तो क्या होगा? इफ यू सी सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज व्हाट? जस्ट चेक इट आउट गाइस। यू हैव 0.22 minus 0.2 and that will give you what? That will give you nothing but 0.02, राइट? आपको यहाँ से 0.02 मिलेगा, और जब मैं दिस माइनस दिस की बात करूंगा तो यहाँ से आपको मिलेगा 0.002, एंड इस वजह से ये आपका कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, एंड दैट इज व्हाई वी से दैट दिस इज नॉट एन एपी। ये आपका एपी नहीं है। Am I clear or not, guys? Please tell me. You got this, everyone? Everyone clear with this? Everyone clear till here? You got this? Everyone out there? Haji, clear? Chalo. Now, tell me about 8th one, guys. 8th वाला आपका AP है या नहीं है? What about 8th one? Is the 8th one your AP or not? Is this your AP or not? Haji, what about you, everyone? Come on, tell me, guys, quickly. Exactly. So if we talk about the eighth one, you can see the first term is what? Minus 1 by 2. Second term is minus 1 by 2. Third term is minus 1 by 2. Fourth term is minus 1 by 2. All the terms are same. सारे के सारे टर्म्स जो हैं आपके वो क्या है? सिमिलर हैं, एंड इस वजह से मैं बोल सकता हूँ यस, इन सब के बीच में जो डिफरेंस है वो जीरो 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 है. इट मीन्स आई हैव द कॉमन डिफरेंस दैट इज इक्वल टू जीरो, and that is why the series that I have over here, that is why the series that I have over here, this series is nothing but what? This series is nothing but AP. Haji, how many of you are clear with this? Please tell me. Everyone got this or not? Everyone out there, guys, are we clear with this? You got this, everyone? Everyone clear with the concepts that we discussed till now in this particular session? You got this, guys? Clear? Okay, good, good. So that's how we can talk about all these things, guys, and that is all from my side for this session. Thank you so much for being here. One important thing to note for you all, guys, yeah, so if anyone who is planning to subscribe to Unacademy, अगर किसी के पास भी Unacademy learning application नहीं है, I would again suggest, guys, please download Unacademy learning app, because on YouTube we have our live sessions only at few times. बहुत ही कम हमारे live sessions YouTube पर होते हैं, but on Unacademy learning app we have sessions every day, and when I'm saying every day I mean every day we have sessions. बहुत सारे sessions हमारे होते हैं, जो लोग पहले से Unacademy पर हैं उन्हें पता होगा कितने sessions हम लोग Unacademy पर लेते हैं. इसके साथ साथ guys, if any one of you who is planning, जो सोच रहा है Unacademy के साथ अपनी पढ़ाई continue करने की, then you all need to make a quick decision, because batches already start हुए हैं and you are losing on so many things. अभी हम लोग batch course के अंदर जो topic discuss कर रहे हैं, that is arithmetic progression itself, यही हम लोग discuss कर रहे हैं, and इसके बाद we will be starting with the triangles in the batch course. So if anyone who is interested, please subscribe to Unacademy Plus so that you can continue your studies on Unacademy. This is the referral code, guys, that you can use, SG08, to get the 10% discount on your subscription charges. And that is all from my side. Thank you so much for being here in the session. I wish you all the good luck, all the very best to you. Have a good day ahead, and thank you so much for being here in the session. Bye, take care. Bye Adish, bye Avnish, bye
Saksham, by Orosri, Arindam, by Tarang, by PPS Chaudhary. May you all get all the things that you want in your life. Take care. Have a good day. Bye.